disappointing that we are discussing on something which the country is absolutely, after 70 years, seeing an inclusive India, where Prime Minister Narendra Modi, after 70 full long years, no other party thought about it. Prime Minister it was who went forward and chose a tribal lady who, on her own strength, educated herself, went to college, worked, became an MLA, then became a minister, then became a good successful governor, and Prime Minister thought it fit that this is the time for a tribal representation to hold the highest constitutional post. And this decision has been so welcomed by the entire country. Congress party all these years didn't think of giving a tribal and more particularly a woman this post. Now instead of coming forward, you had from the time the nomination being announced, every representative of the Congress party speaking ill of the candidate and using expressions which are totally unacceptable. She belongs to a toxic, she just went to her village temple and prayed, and that provoked them to say even that much. And even today, I am finding it astonishing and absolutely despicable that the Congress party doesn't show any remorse. It doesn't have any sense of guilt. On the contrary, you find Adhir Ranjan Chaudhary ji claiming there is no reason for apology. And when from the morning all the women MPs, ministers, tribal leaders are saying that Srimati Sonia Gandhi, being the head of the Congress party, should, being herself a woman, should come out and say, sorry, our people were wrong. And I don't support such things. Instead of that, we are being misled. I just now seen through the media a clip which says Srimati Sonia Gandhi saying he has already apologized. He's already apologized? It's on record where Adhir Ranjan Chaudhary is saying there's no reason for me to apologize. And earlier there was a Congress representative who said no, she belongs to this toxic ideology. In every way, they have been repeatedly attempting to undermine a tribal, self-made, successful woman leader. And the height of it is when, as though you're talking about, generally in a light-hearted way, Pati, Patni, that type. Rashtrapati in Sanskrit and in Hindi. And no dictionary you will find Rashtrapatni as a word, Moni or Williams onwards, anyone you can take. And for my curiosity, I even consulted a Hindi Sanskrit scholar, Nityanand Mishra, who is very active in social media. He sent me a note saying this is a sexist abuse. It's such an insult. Nowhere in Sanskrit that Rashtrapati will have to become Rashtrapatni. Rashtrapati is the word to mean leader of the country. And there's no gender differentiation, it is gender agnostic. So we from the BJP repeat, and even now, let me add in, some of our members of parliament in Lok Sabha felt very threatened, and I'm saying it before you, I didn't imagine there will be a situation for me to say it, felt threatened that Srimati Sonia Gandhi herself came up to probably one of our very senior members, Rama Devi ji, to find out, and one other member of our parliament, our people, members, approached there and she said, you don't talk to me. As though putting the member of parliament down in the house. So instead of remorse, from the highest leader of Congress party, we find greater and greater aggression and putting down members of parliament who are demanding an apology. All the more reason that the Congress party now repeatedly, even Piyush ji has shown, repeatedly abusing and talking with contempt for tribal leaders, should come out and apologize to the nation. Misleading from one end to another. Adhir ji saying, no, I will not apologize. I have no doubt, no question of apology. And Mrs. Srimati Sonia Gandhi is saying,
He's already apologized. I'm sorry, madam, you're misleading the country. Sonia ji, you're misleading the country. You're justifying abusing tribal lady who's now the president. Please, I think the Congress party should stop this, come out and apologize to the Rashtrapati and to the entire nation. I didn't expect this from Srimati Sonia Gandhi. मैं इस बहस में भाग लेने से पहले संस्कृत और हिंदी के एक पंडित जी नित्यानंद मिश्रा जी, जो सोशल मीडिया में भी एक्टिव है, उनसे भी एक बार कल रात को 10:30 बजे के करीब बात की और मुझे वो नोट भी लिखित में भेजे कि पाणिनि के रेफरेंस करते हुए मोनियर विलियम्स, जो संस्कृत का डिक्शनरी और थिसॉरस में उनका काम भी है, उन सबको कोट करते हुए बोलते हैं कि कॉमन सेंस इन हिंदी और इन संस्कृत सेज राष्ट्रपति ही सही वर्ड होता है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। राष्ट्रपति का उधर जिक्र ही नहीं है। ये कॉमन सेंस है, सबको मालूम है। नित्यानंद मिश्रा जी मुझे लिखित में भेजा है, मैं चाहिए तो अब मीडिया को सर्कुलेट भी करूंगी उसको। इसके बावजूद भी आज आदिर रंजन चौधरी जी उसी बात में अड़े होकर के बोलते हैं क्षमा मांगने का कुछ भी है नहीं विषय। और दूसरी ओर श्रीमती सोनिया गांधी सेंट्रल हॉल से बाहर आते हुए कोई पत्रकार लोग उनसे पूछे कि ये क्या है, वो आदिर जी अपॉलॉजी मांगेंगे, और बहुत ही सख्ती से नहीं, he had already apologized, ये शब्द श्रीमती सोनिया गांधी ने बताया। जबकि ये बोल रहे हैं आदिर चौधरी बोलते हैं अपॉलॉजी का कुछ भी नहीं बात बनता है। ये देश का अपमान है, आदिवासी लोगों का अपमान है। वो उनके गांव में जो मंदिर में गए, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता एक बोलता है कि नहीं, ये शी बिलोंग्स टू दिस टॉक्सिक आरएसएस फिलॉसफी। ये सब पहले से ही, जहां नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्राइबल को 70 इयर्स के बाद नियुक्त किया राष्ट्रपति पद के लिए, चुनाव के लिए, ये 60 साल को आपको यू नेवर 60 और 70 इयर्स यू डिडंट थिंक ऑफ इट। और सामने आकर के आदिवासी एक महिला को समर्थन ना देते हुए अपमानजनक बातें करते रहे कांग्रेस, और आज भी पछताना नहीं है। कांग्रेस के मन में इसके लिए कोई भी सेंस ऑफ पछतावनीय बात कोई नहीं बात कर रहे हैं, ऊपर से मिसलीड कर रहे हैं देश को। और एक विषय में जोड़ना चाह रहा हूं, हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे ट्रेनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं हमारे साथ, भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलॉजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नए आदिर ने अपॉलॉजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है? शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलॉजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए, ऊपर से अपॉलॉजी नहीं मगर धमकियां। मैं इसको खंडन करती हूं और डिमांड करती हूं श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के साथ।